यस। डेविल, गुंडा, ये गॉड, पॉइजन, बाकी लोग आ रहे हैं। ओके, सब बाकी लोग आ रहे, कोई नहीं। हम्म, मैं चलो थोड़ा सा देखता हूँ। अरे वो किधर है? আমরা আরো ওয়েট করি ভাই, আমরা ওয়েট করি, এখনো টাইম হয়নি, তো আমরা আরো 10 মিনিট ওয়েট করি। यहाँ पे डाल रखा है वो तो आपने कौन सा? कौन सा? अनाउंसमेंट, लाइक यहाँ की जो पुरानी है पब्लिक, वो कहाँ है? आएगा आएगा आएगा। अभी अभी थोड़ा टाइम है ना, अभी 5 मिनट है। और ओके सब तो वक्त का उतना पाबंद भी नहीं है ना। ओके, आई नो दैट। नहीं, हाँ मैं बस जस्ट पूछ रहा हूँ बे। हाँ हाँ। हम्म, देखता हूँ अभी कौन कौन आता है। और रुक, मैं थोड़ा आया। जो ये कहाँ है? कैप्टन, रुक, मैं थोड़ा आया। जो ये कहाँ है? मैं थोड़ा आया। हाँ। अच्छा, हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है? देखते हैं और कौन कौन आता है, ठीक है? देन विल स्टार्ट द मेन थिंग। अच्छा, हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है? देखते हैं और कौन कौन आता है, ठीक है? देन विल स्टार्ट द मेन थिंग। हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है? देखते हैं और कौन कौन आता है, ठीक है? देन विल स्टार्ट। हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है? देखते हैं और कौन कौन आता है, ठीक है? अच्छा गाइस, यहाँ पे एक ऊपर देखना मीटिंग चैट है।
किसी का भी कोई क्वेश्चन कुछ भी हो वहाँ पे डाल दो. We'll cover up. First, probably we'll talk about what we have and what things are we are doing. और उसके बाद कोई भी questions हो, we'll answer them. We haven't started yet. We'll just wait a little bit. और उसके बाद कोई भी questions हो, we'll answer them. We haven't started yet. We'll just wait a little bit. और उसके बाद कोई भी questions हो, we'll answer them. We haven't started yet. We'll just wait a little bit. और उसके बाद कोई भी questions हो, we'll answer them. We haven't started yet. Just wait a little bit. और उसके बाद कोई भी questions हो, we'll answer them. यासिन भाई, হ্যাঁ should we start or আমরা আহ, একটু because I 11:30 think দেওয়া ছিল না সময় হ্যাঁ টাইম অনুযায়ী কি হয়ে গেছে না? আপনি হচ্ছে পারেন শুরু করতে প্রবলেম নাই 5 মিনিট ওয়েট করি. হ্যাঁ শিওর ওকে 5 মিনিট, we'll just wait 5 minutes and then we'll start. Okay, just we'll wait. Let's say we wait 7 minutes. We'll start at 40. না কিছু লাগবে না ঠিক আছে সমস্যা নাই ঘুমায় ও ও সমস্যা নাই আমি ডাক দিয়ে দিব না ঘুমায় যাও তোমরা হুম প্রবলেম নাই ঘুমাও তোমরা জায়গা নাই
So this is the launching day. সবাই ওয়েট করতেছে, মিটিং চ্যাট দেখতেছে আমরা। Just 2 more minutes, then we'll start. Okay. জয় জনগণ, সবাই তো মিউটেড। আমি কি একাই কারো কথা শুনতেছি না নাকি? না, সবাই মিউট করা এখানে। মিউট করে রাখছি। আমরা দেখতেছি অলরেডি 41 জন জয়েন করে ফেলছে আমাদের সাথে। থ্যাংকস এভরিওয়ান ফর কামিং, থ্যাংকস ফর জয়নিং দ্য মিটিং। ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব নতুনভাবে আমাদের পুরান এসজিআরপিকে ফিরে আনার, আমাদের জনগণ রোল ব্রেকে ফিরে আনার, ইনশাল্লাহ। নতুন করে যাত্রা শুরু হোক সবার সাথে, সবাইকে একসাথে নিয়ে, এটাই আমার কাম্য। তাও আজকে মিটিং অনেক কিছু কভার আপ করা হবে, কি কি চেঞ্জেস আসছে, হোয়াট এভার হ্যাপেন উইথ আস, কি প্রবলেম ফেস করছি আমরা রিগার্ডিং টু অল অফ দ্যাট। আমরা চেষ্টা করব সবসময় সব কিছু সলভ করে একসাথে চলার। আমার নেট না গেলেই হইলো মাঝখান দিয়া। পুরনো সেই জনগণরা আজকে আবার একসাথে, রাইট। Yasin bhai, I think we should start. শুড আই স্টার্ট? Yep. ওকে, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। থ্যাঙ্কস আজকে আসার জন্য। আর যারা হচ্ছে আমার ইন্ডিয়ান ভাই বোনেরা আছেন সবাইকে নমস্কার। আজকে মিটিংটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট, যেহেতু আমরা একটা ভার্সন লঞ্চ করতে যাচ্ছি এসজিআরপিতে। আর लाइक मैं रोकना चाहूंगा, लाइक हिंदी हो जाता तो लाइक बेटर होता ना, लाइक হ্যাঁ, সরি। Rian bhai, can you translate them in Hindi? Yeah, It will be sure, I better. can do that. I can do that. No worry, no worry. yeah. Yeah. One should translate. সমস্যা নেই, আমার পরে হচ্ছে রিয়ান ভাই সব কিছু বলবে। আমার হচ্ছে স্মল একটা পার্ট, ঠিক আছে? বাকিগুলো হচ্ছে হয়তো বা আমি স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে সবাইকে দেখানোর চেষ্টা করব। আর অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এসজিআরপির জার্নিটা আছে হচ্ছে 1.5 বছর। সো 1.5 বছরে হচ্ছে যে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস গেছে, অনেক কিছু হয়েছে, সার্ভারে অনেক মানুষ আমরা হারাইছি, অনেক পাইছি। বাট লাস্ট মোমেন্টে হচ্ছে যে আমরা সব কিছু মাথায় রেখে নতুন করে আবার স্টার্ট করতে যাচ্ছি। তো সবাইকে রেখে না, আমরা চাচ্ছি সবাইকে একসাথে নিয়ে আমরা জার্নিটা স্টার্ট করব। আর বাকিগুলো হচ্ছে যে রিয়ান ভাই আপনাদের সাথে মেইনলি হচ্ছে আজকে ডিসকাশনটা করবেন। অবশ্য আপনাদেরও মতামত বা আপনাদের কোনো কোশ্চেন অ্যান্ড আদার স্টাফ থাকলে আপনাদের কাছ থেকে শোনা হবে। আমি তো আমার লাইফে অনেক মিটিং করছি, বাট আজকে মেইন মিটিংটা আমি হচ্ছে রিয়ান ভাইকে দিব। অনেকে হচ্ছে এখানে নতুন, আর অনেকে হচ্ছে পুরান মানুষ আছেন। সো বেসিক্যালি হচ্ছে আমি পরিচয় একটু করাই দিই সবার সাথে অ্যাগেন, আবার যারা নতুন আছেন যারা পুরান আছেন সবার মাঝখানে, ঠিক আছে? তা আমি তো এখানে হচ্ছে সার্ভার ওনার, আমার নিচে আছে অ্যাডমিনসের মধ্যে জুনায়েদ ভাই, ডাবশিফট অ্যান্ড আফরিদ, আপনারা তাদেরকে হয়তো চিনেন। আর রিয়ান ভাই হচ্ছে আমাদের এখানে কমিউনিটি ম্যানেজার হিসাবে উনি জয়েন করেছেন। আর ওনার নিচে আছেন সিনিয়র মডারেটর ক্রেজি, মডারেটর হিসাবে আমাদের মাস্টার জিয়াজো ইনসেন, অ্যান্ড লটস অফ পিপল অলরেডি আমাদের আগে এখানে ছিলেন। আপনারা অনেকেই অনেকে চিনেন। সো এটা নতুন করে বুঝায় দেওয়ার আমার ইয়া নেই। সো সবাই মানে I welcome everyone from my heart, and rest of the meeting I pass to Rian Bhai. Rian Bhai, can you please continue from here? Yep. Okay, thank you everyone. So I'll start again. सबको पहले सलाम नमस्ते सब कुछ बोल के I will be speaking in English and Hindi both. Basically this server is not new.
ये सर्वर जो है अभी 1.5 साल से चल रहा है और एंड मोस्टली ये था बांग्लादेश बेस्ड एक सर्वर था, बट वी हैव टेकन डिसीजन और हम लोग ये अभी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो ये कंट्रीज का है, इसमें हम लोग अभी जा रहे हैं। तो सबको ही वेलकम है यहाँ पे। एंड अबाउट लैंग्वेज, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, व्हाटएवर आप लोग को पसंद है या आप लोग बोलते हो, यू कैन टॉक इन दैट। एंड हम लोग का जो ये टीम है, was talking about team 2, हम लोग अभी Green Ghost, he's the owner of the server. We have admins Afrid, Zunaid, अभी मैं कम्युनिटी मैनेजमेंट में हूँ यहाँ पे। वी डू हैव सीनियर मॉडरेटर क्रेजी, इनसेन, जियाजो, and there are more people in our stuff we have. So now I'll start. As I said already कि ये सर्वर जो था ये पहले बंगाली बांग्लादेश बेस्ड एक सर्वर था, बट नाउ वी हैव चेंज्ड एंड हम लोग का जो थीम भी अंदर था यहाँ पे बंगाली में लिखा हुआ था एंड दिस एंड दैट। बहुत सारे हम लोग का कस्टम एमएलओज हम लोग ने खुद बनाया था। वो बंगाली में था, बांग्लादेश को ध्यान में रखते हुए था। बट नाउ वी हैव चेंज्ड एंड वी हैव डन इट इन एलएस स्टाइल। सो अभी जो है लॉस सांतोस का जो थीम है, वहाँ का सिस्टम है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट। सब कुछ अभी उस पे ही बेस्ड है। एंड हम लोग का यहाँ पे पहले जो यहाँ पे खेला है, आई नो देयर आर मेनी पीपल हैव प्लेड हियर बिफोर। यहाँ पे जो जैसा मैप था, जैसा सिस्टम था, सब कुछ अभी चेंज्ड है। ये पॉइंट फॉर दोज बंगाली प्लेयर्स हु हैव प्लेड हियर बिफोर। I don't know if Indian players were here before or not, but for them maybe everything is new. The server is totally new. तो चलो हम लोग का यहाँ पे कस्टम मैप्स है, हम लोगों ने ये सब डाला हुआ है। जॉब जो है पहले जो था अभी वैसा नहीं है। हम लोग का यहाँ पे न्यू सिस्टम बना है सब कुछ को लेके, मैकेनिक, पीडीएम, वी डू हैव अ रेस्टोरेंट हियर, न्यू कैट कैफे या वो जो भी नाम है उसका, एंड पुलिस डिपार्टमेंट, ईएमएस डिपार्टमेंट, सब कुछ यहाँ पे हम लोग प्रीवियस जो था यहाँ पे जैसे चल रहा था उससे यहाँ पे अभी डिफरेंट है। We do have white jobs too. Common jobs like garbage, hunting, mining, metal detectors, those sort of things. Illegal में for now आप लोगों को 3 चीज मिलेगा। One is weed, one is cocaine. एक और भी है, उसका नाम मैं अभी नहीं लूंगा। You guys have to सभी ढूंढना पड़ेगा, बट दैट्स समथिंग डिफरेंट टोटली। सो वो आप लोग को मिल जाएगा सिटी में। एंड अदर्स भी बहुत सारी चीज है यहाँ पे जो इलीगल में है। वी डू हैव सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हाइस्ट, कायोपेरी को हाइस्ट है। यहाँ पे बहुत सारे सामान आपको मिलेगा जो यूजेबल है। इट्स नॉट लाइक कि आपको एक चीज मिला और उसका कोई यूज नहीं है सिटी के अंदर, नॉट लाइक दैट। इफ यू फाइंड समथिंग, मोस्ट प्रॉब्ली देयर इज अ यूज फॉर दैट। मे बी उसको आप बेच के कुछ कर सकते हो, या तो फिर देयर इज अ वे यू कैन यूज इट एंड यू कैन अर्न सम मनी। फॉर गैंग पार्ट में अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे जो गैंग्स होगा, वो जो एलएस या तो फिर जीटीए का डिफॉल्ट जो गैंग है उसके हिसाब से ही होगा। लेट्स से वागोज या बालाज, एलएमसी या वो सब वो फॉर्मेट में जाएगा। इफ somebody सेज कि हाँ नो, मुझे एक पर्सन, मेरा मतलब आई डू हैव अ गैंग एंड दैट्स कॉल्ड दैट, एंड उसकी बेस पे हम लोग को गैंग बनाना है। सो वो सिस्टम अभी हम लोग यहाँ पे नहीं है। तो इन सिटी जो डिफॉल्ट गैंग्स है, हम लोग स्टार्टिंग में कुछ गैंग का वो डाल देंगे कि कौन सा गैंग आप कर सकते हो। इफ वी सी दैट के सिटी में और भी गैंग्स बनाना चाह रहा है, देयर आर मोर पीपल, हम लोग को और भी गैंग ऐड करना है, विल डू दैट।
सो उसमें वो नहीं है, बट फॉर नाउ सर्टन गैंग्स उसका हम लोग वो दे देंगे, आप देख लोगे कि कौन सा गैंग है। फॉर गैंग यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, कस्टम एमएलओ, घर वर वो सब मिल जाएगा। आपको कुछ गाड़ी भी मिलेगा, जो कि जो जिस गैंग करेगा उसके हिसाब से उसको कुछ गाड़ी भी वहां पे दिया गया हुआ है। एंड दोज आर पीडीएम कार्स। वहाँ पे पर्सनल गैरेज भी है, वहाँ पे वो सब कार के लिए भी है। जो लीडर है उसके लिए वहाँ पे बॉस मेन्यू है, वहाँ पे वो कंट्रोल कर सकता है हायर फायर एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सिटी के अंदर ऑब्वियसली जब कोई खेलेगा, आरपी करेगा, रहेगा, जैसे भी मैं बोलूं, दे विल बी देयर विल बी पर्सन जो हम लोग वो देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है। इट्स नॉट गोना बी लाइक के आप जैसे मतलब ओसी में कुछ बात कर लो या यू टॉक अबाउट other things, you know, जो RP break करता है। So we will monitor those things and basis on that आप लोग को क्या है उसका मतलब आप लोग को वो फेस करना पड़ेगा जो consequences है वो। So we will be kinda strict, you can say, about those things. So ये जरूर सबके ध्यान में रहे कि हाँ भाई यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ मत करना कि जिसकी वजह से आपको कुछ स्ट्राइक बैन वो सॉर्ट ऑफ थिंग्स में आपको जाना पड़े। सिटी का हम लोग का जो रूल है, फॉर नाउ आप लोग वो रूल जाके पढ़ सकते हो। वी विल ब्रिंग सम चेंजेस इन दोज रूल, मे बी इन 1-2 दिन में। यू नो इफ छोटा छोटा वोटा चीज, बट मोस्टली जो चीज है वहां पे अभी लिखा गया हुआ है, सो आप लोग वो पढ़ के देख सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर कोई भी सिचुएशन होता है, अगर किसी को कुछ लगता है कि हाँ ये जो दूसरा जो सामने से जो आरपी कर रहा है वो आरपी प्रॉपर आरपी है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, और आप अगर सपोर्ट में आते हो, तो आई विल रिक्वेस्ट के मेक श्योर यू ब्रिंग अ क्लिप विथ यू, सो दैट वो हम लोग को वो जो क्या चल रहा है वो निर्णय लेने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है। एक चीज हम लोग ने डिसाइड किया है कि इन सिटी अब्यूज जो है दैट विल बी अलाउड, बट ये जरूर दिमाग में ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन सिटी इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, यू आर डूइंग आरपी, दैट्स वहां पे जो हो रहा है दैट मे नॉट बी पर्सनल, बट if you come to Discord and if you come with any issue in Discord and आप अगर Discord में कुछ भी किसी को बुरा भला कहते हो, वो बहुत strictly will take action and so everybody, सबको वो ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग को वो आप पूछ सकते हो, ठीक है, विल बी आंसरिंग। एंड हम लोग का जो कार का सिस्टम है आप लोग वो भी देख लेना, ईडीएम कार्स जो है उसका सिस्टम है, उसको लेकर भी आप लोग को शायद क्वेश्चन या कुछ हो सकता है। सो वो आप पूछ लेना, कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। और वन मोर थिंग, दिस फ्राइडे सैटरडे एंड संडे वी इट्स यू कैन से इट्स एन इवेंट, वी आर हैविंग एन इवेंट। वो 3 दिन में आप लोग को एक गाड़ी सिटी की तरफ से मिल जाएगा। आप अगर वो दिन आते हो कोई, तो आप लोग को वो एक कार आप लोग क्लेम कर सकते हो। सो मेक श्योर यू स्टे इन सिटी, आप लोग सिटी में आओ एंड यू नो get those cars, yeah, you know, you can collect those cars. From my side, I thought ये सब इतना ही था अभी बोलने के लिए। I will go to questions. Can somebody assist me, Afrid or anyone? Yasin bhai, कोई भी Yeah, I'm with here. questions? Yep. All right. So we are open for questions right now. If anyone has any question, I would suggest that you drop in the meeting chat first.
so that we can read it out beforehand, and then open your mic and then ask your question, please. So one by one. We'll open your mic, right? Yeah. If you have any question, just raise hand or do something. We'll open your mic so that you can ask. Yeah, just एंड drop it in the meeting इंडियन chat and we'll. कम्युनिटी से भी लाइक जो जिनको लाइक मैं Oh, one more thing. हाँ, Mihir, you. Yep, तो Mihir. वो लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है अपने मन में लाइक कोई भी डाउट्स है तो लाइक तुम बोल लो, ठीक है। यहाँ पे मीटिंग चैट ओपन है तुम लोगों के लिए भी, तो डालो वहाँ पे, तुम लोगों को अपना आंसर मिल जाएगा जो भी होगा वो सर्वर से। And one more thing, since the start of 4.0, so whatever data you have, nothing has been changed. So we are not wiping this, right? So keep that in mind. There is no wipe, right? Am I right, Rian bhai? Yep. Okay, so there This is no one is wipe. Okay. 4.1 and 4.0 में যারা যারা ছিল অথবা those who have played उसका जो भी data है वगैरह वगैरह everything is there, including cars and everything. So वो ওটা যাচ্ছে না. So yeah, What and about our old cars? Okay, can you open his mic, please? okay, Mr. Adel, right? Adel, One second. yep. Yes, Adel, bro. Yes, you can say. Which old cars? Uh, Bro, I'm talking about that like um I was playing in SJRP 3.0, then I stopped playing in 4 and I didn't play in 4. So I don't know about the old cars I have. How how can I get them? Most probably, So if you played in 3.0, which means the city was wiped, right? Yep. So most probably, what happens is naturally যেটা হয় যে everything gets wiped. So those cars were wiped. 4 পয়েন্টে যারা ছিল তাদের প্রত্যেকটা গাড়ি আই থিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাইট? ইচ এন্ড এভরি। yeah, এবং so এখনো যদি কেউ ক্লেম করে না থাকে, উই আর ওপেন ফর দ্যাট টু, যে দে ক্যান কাম এন্ড দে ক্যান কালেক্ট দেয়ার কার, বাট দ্যাটস 4 পয়েন্টে যারা ছিল। বাট 3.1 অনেক আগের। আচ্ছা, উই হ্যাভ অ্যানাদার। okay, so legend. আরেকটু So উপরে, I'll- so the city is switching to Los Santos based RP fully yes spider, yes, এটা টোটালি হচ্ছে okay, গিয়ে so I'll unmute Mr. বাংলা। Legend for his Yes. question. One second. Hello. Yes. Acha, the fact is, our car was given in 4.0. So the my question is, वो सब रहेंगे और वो भी डिलीट? ना नहीं 4.0 वो रहेंगे। एवरीथिंग, हाँ, वो सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा। 4 पॉइंट में जिसको जो भी था, सब कुछ मिल रहा है। इवन वी आर यूजिंग द सेम डेटा। Okay. Something happened, and for that reason we have totally changed to LS. What happened? Okay, got I it. will not be talking about that. But something happened. Some of you may know, some of you may not know. But those of you doesn't know, मैं वो बोलना नहीं चाहता. But we are keeping the data from 4.0, Okay. and everything is there, bro. Okay, got it. Thank you. Then नेडेक्स का सवाल है कि लाइक यहाँ पे डीओजे आरपी कर सकते हैं, तो मैंने तुम्हें नेडेक्स बताया था वो चीज रेक्स कि कर सकते हैं, ठीक है। और जो डीओजे की आरपी के लिए जो चीजें है वो आपको बाद में बता दी जाएगी, ठीक है। So as much as the departments go, so the departments mainly consists of police, EMS, mechanic, there's cat cafe, and PDM, right? So the law enforcement departments is right now the police, which will have multiple sectors, both the LSPD, BCSO, and there will be more on the way. For example, SWATs and motorcycle divisions, and DEA and FID and
etc., etc. So things like this will be on the way, and department applications are obviously open right now. So after this meeting, if anyone wants to apply for the departments, just apply, and I will explain the procedure of how the departments are going to work. Okay. All right. So Rian bhai, continue. Yep. Someone wrote here something. I'm accessing to any complaint. Previous solving city. Yes. He's. I think this is not a question. This is something you have suggested. कि सिटी में ही जो हो वो सॉल्व किया जाए. Look, we all want that, I guess. कि कोई कुछ भी हो वो ऊपर तक ना आए. You know, if you guys are doing RP, if you guys are creating a situation, then we all want कि वो सिटी तक ही रहे. सिटी के बाहर कब आता है? If somebody does fail RP or somebody, you know, वो कुछ ज्यादा personal या you know वो उस तरफ अगर कुछ जाता है, in that case that comes in ऊपर RR. So yes, I do agree with you, and I would request everyone कि let's do matured RP in city, so that ऐसा कुछ ना हो कि भाई छोटा छोटा चीज लेके हम लोग को ऊपर आना पड़ रहा है. Because अगर कोई बंदा ऊपर आता है, then we will see both sides thing. You can count me on that कि it's not gonna be like कि कोई बंदा आकर मुझे ये बोल रहा है and I will just listen to that person and I'll take a decision or something like that. I will talk 1v1 with both, and also not 1v1, and I'll also talk together कि अभी मेरे को बोलो कि यहाँ पे situation क्या है. And I already said it कि अगर कोई ऊपर आता है, make sure you come with clip. Make sure you come with clip, so that you know the things जो है वो easy हो जाए. So, more questions? Anything? Mihir, Yes. anyone asked you anything? तुमको कोई कुछ पूछा? नहीं, मुझे नहीं कोई कुछ, बस जो था वो बता दिया. हाँ. Any questions regarding anything, departments, gangs, or anything? The PDM manager. So Afri, go on. someone please explain. Okay, so the PDM manager. So the PDM manager will now have the ability to show you cars. That is, like, from now on, it will not only be fixed to a certain amount of cars in the PDM, right? The PDM manager will have the ability to show cars in a stock. Like PDM manager की stock में वो गाड़ी होना, show them to you like one by one, and you will have options to buy them from them. So I think the rest is depending on your RP, how you do it, the stuff. Yes, Tina. This is LSPD. And So और एक प्रति सप्ताह oh Afid, you're not done. yes, so the PDM manager will be controlled by a certain department. It's right now it's under the government. So if you want to apply for the PDM department, just go ahead and fill out the applications. The applications are all open right now, and yeah, I think that's it. প্রতি সপ্তাহে একটা মিটিং এর কথা যেটা বলা হয়েছে, আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব. ভালো সাজেশন. যদি প্রতি সপ্তাহে আমরা সময় একদিন করতে পারি সবাই মিলে, if everybody agrees that okay fine we'll sit for a meeting or something, obviously we'll think of it, we'll try to do it. But at least যদি ধরি যে প্রতি সপ্তাহ নাও হয়ে থাকে, at least 15 দিন অথবা এক মাসে, এক মহিনা या like 15 days में we will try to sit everyone together एक community meeting कि क्या हो रहा है. I mean जो city में बंदा है उसको कोई दिक्कत हो रहा है या if there's something, you know, we will talk about it, because the server is for player, the server is for you all. So we will respect that कि कोई किसी भी अगर कोई कुछ मतलब will overall अगर कुछ चीज में प्रॉब्लम हो रहा है, we will talk about it, we'll fix it, we'll talk about it. So Department application है, application रोहन, you can get application, you know, you'll be PDM का जो application form है वो मिल जाएगा. Yes, Afid. Okay.
So if anyone have inquiries about how to apply for the departments, so some departments might have walk-in interviews. That's totally up to their department policy. But as far as if you are concerned about the LSPD, so the LSPD will have a different procedure for application. The first time you will submit the application, if we accept your application, we'll give you the wait for interview role, right? And then you'll gain access to a channel that will have all the police study books. So this study books you will have access to for 1 week. And in this 1 week, not only that you will study the police rules and regulations, you will also receive in city like trainings, field trainings. We will take you on situations. We will teach you how to shoot firearms, how to do basic maneuvers, how to like do combat scenarios, medics, and everything. So this 1 week, not only that you will be going through, will be going through the study books and gain basic knowledge. You will also be doing a duty as like a cadet in the police academy. Now, when you're done after 1 week, your FTO or your senior trainers will take your exam, both an interview and a in-city field exam, like how well you are performing. So when you are done with the trainings and everything, if you pass the interview and the training course and everything, you will be directly admitted to as an officer in the LSPD. So is that clear? Any more questions? अगर if yes, sure, Mr. Legend. Can you unmute? হ্যালো Yes. আচ্ছা, কথাটা এরকম যে যদি এরকম মানে কোনো অপশন আছে আপনাদের কাছে যে আমরা একটা ডিপার্টমেন্টে আছি, তো আমরা অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে মানে অন্য কোনো ক্যারেক্টারে থাকতে পারবো? লাইক আমি বলতে চাচ্ছি কি যে সাপোজ আমি পিডিতে আছি, পুলিশ ডিপার্টমেন্টে আছি, তো আমি কি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থাকা অবস্থায় অন্য ক্যারেক্টারকে আমি অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে কি গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টে কি অ্যাপ্লাই করতে পারবো? I think you have the ability to do that. Yeah, you have the ability to do that, but like as long as both your department chiefs agree, okay? Like আপনি যদি আপনার যে ডিপার্টমেন্টে কারেন্টলি আছেন এই ডিপার্টমেন্টের চিফও এগ্রি করছে, আপনি যে ডিপার্টমেন্টে করতে চান ওই ডিপার্টমেন্টের চিফও এগ্রি করছে, ইন দ্যাট কেস देयर इज नो প্রবলেম। ওকে, ঠিক আছে। তো আপনি একটা চিফের অনুমতি ছাড়া আবার করতে পারবেন না। ইফ ওয়ান অফ দেম at least makes a fuss about it that no, I don't want you to do that, then you cannot. So it really depends on your chief. Okay, got it. Yeah, Spider I think Afred, I think লেনিন ভাই আপনার কি পুরো কোশ্চেনটা কি কভার্ড নাকি হচ্ছে ইউ মিন গ্যাং পার্ট 2? না গ্যাং না, হ্যাঁ, যদি ডিপার্টমেন্ট হয় দেন দ্যাটস নো ইস্যু, যদি ওইসব ডিপার্টমেন্টের চিফদের কোনো প্রবলেম না থাকে। বাট যদি সেটা গ্যাং কি বলে মানে যদি গভর্নমেন্ট জব হয়ে থাকে, বাট যদি গ্যাং হয়ে থাকে ইন দ্যাট কেস দেয়ার উইল বি সাম ইস্যুস। আমি ওটাই বলছি, গ্যাং এরটা না, আমি ডিপার্টমেন্টের কথা বলছি, জাস্ট গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। ইয়েস, ওকে, লাইক আমি পিডি থেকে যাচ্ছি, পিডি থেকে এই যে এটা, হ্যাঁ শিওর, ওটা ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার হলে দেয়ার উইল বি নো ইস্যু। Spider, please, Spider, trying to say something. Give me a Spider, second. আমরা একটু উপর থেকে আসি। He was Okay, just a minute. Okay, now try. Okay, so I have a question. The whole city is switching to 1 minute. The whole city is switching to Los Santos format. Am I right? So the police department will generally turn into LSPD format. The LSPD format requires a sheriff department. BCSO, you mean? Yes, Blind County Sheriff Operations. So the sheriff, हम जो लोग पुलिस पे करते हैं वो जानते हैं कि शेरिफ पे टॉक्सिसिटी और एब्यूसिव वर्ड्स अलाउड है। सो क्या इस सिटी पे भी हम शेरिफ आरपी पे जनरली जो एब्यूसिव वर्ड है यूज कर सकते हैं क्या? बिकॉज शेरिफ आरपी allows us to use toxicity.
Okay, so it really depends on your department's policy. Okay, so if your department allows crude behavior, then there is no problem. If your sheriff personally allows that, okay, fine, you can use your file language, you can do that. But if your chief, like your sheriff, the sheriff of their department, if they are like, no, I do not want this sort of behavior in my department, then it totally depends on that, because we are allowing abusive behavior from the server, but police role plays a totally different sector. That really depends on your department. What is the rules and regulations of your department? So basically, you So were saying the sheriff rule and the police rule will be totally depending on the chief of the department and the department uh, policy. exactly. So the chief of the LSPD will have a different chief. The sheriff's office will have a different chief. Okay, the SWAT will have Yes. a different chief. So it really depends on individual of them, like how So they they want their department so to be. they won't be included as the subdivision in LSPD. They will be a different department. Yeah, there will be wings of the DOJ, right? Department of Justice. There will be like separate wings of under the DOJ. There will not be like subdivision of the LSPD. There will be three different sectors under the Department of Justice. Will the Department of the Justice have a separate chief or in charge? The Department of Justice will have a separate in charge. Okay, I got my answer. Thank you. The Department of Justice will be most probably controlled by the government or the owner here. So that is the highest possibility. Probably it will get be controlled by the owner who's sitting here, the Department of Justice. Or there is another thing, that's the Homeland Security. So both of these will control the departments. Okay. Mainly the government will control the main sectors of defense. Exactly. The main sectors of the defense will be controlled by the government, and every single department might have their own ways of operating, right? Some people Yes. might operate in different language, some people, but since we are, this is American style, so you might come across words that might sound offensive, but it's very normal in the Western society. Yes, we have to switch with the time. Thank you. I got my answer. Devil Zone Gaming. Can you open his mic? He wanted to ask something or talk about something. Devil Zone Gaming. Give me a second. Hello. पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, सजेशन मान लो या कुछ भी मान लो कि जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब्स हैं, जैसे पीडीएम हो गई, ईएमएस हो गई, प्लीज इन जॉब्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिविलियन की। तो बेसिकली ये कहना चाहूंगा, इंटरव्यू जो भी ले रहा है, जिसका भी डिपार्टमेंट रहेगा, पीडीएम का या ईएमएस का, प्लीज बंदों को जरा देख के ले, पहली चीज। दूसरी, ऐसा ना हो कि बंदे को, देखो बेसिक है, कुछ बंदों को रूल्स का पता नहीं होगा कि भाई क्या हमारे कोड वन है क्या नहीं है। बेसिकली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मली पता होनी चाहिए कि अगर कोई सिचुएशन हो रही है तो हालात में कोई भी पीडी ऑफिसर या ईएमएस ऑफिसर क्या करेगा। दूसरी चीज, अभी एक सर बोल रहे थे टॉक्सिसिटी, ऑफिसर टॉक्सिसिटी कर सकता है नहीं कर सकता। बेसिकली वो होनी चाहिए डिपेंड ऑन आरपी, कि अगर बंदा सामने से तुमसे गलत बोल रहा है तो तुम हाँ फिर उस तरीके से बात करो। लेकिन अगर कोई, मान लो मैं एक सिविलियन हूँ, आगे से कोई ऑफिसर जा रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ और वो बदतमीजी से बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर टॉक्सिसिटी कर रहा है तो अगर दूसरी साइड से टॉक्सिसिटी हो रही है तो करो। मैं बेसिकली वही कहना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा हुआ था कि हम एक ऑफिसर के साथ एक आरपी कर रहे थे, तो उस ऑफिसर ने सीधी गोली चला दी हमारे ऊपर, गाली देके गोली चला दी बिना किसी वजह के। हमने क्या कहा था, नॉर्मली चिल करने के लिए हमने बोला था कि पुल ओवर बोल रहे थे उसको, वैसे थोड़ा इरिटेट कर रहे थे, तो गोली चलानी शुरू कर दी। वो छोड़ो, फिर एक सिचुएशन हुई थी कि एक क्रिमिनल था, उसने गन फायरिंग करी, वो पीडी ऑफिसर के सामने ही था। तो बेसिकली ये चीज होनी चाहिए कि सस्पेक्ट कौन है क्या है। उस सस्पेक्ट के हाथ में गन भी थी और गन लेके वो खड़ा था पीडी के सामने,
और वहां पे गन शॉट्स हुए थे। तो बेसिकली ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इतना तो बेसिकली रूल पता होना चाहिए पीडी ऑफिसर को। तो ये चीज है कि जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब्स हैं उस पे जरा ध्यान से इंटरव्यू लें। Definitely, definitely. डेविल Thank you for your ब्रो, suggestion. थैंक्स फॉर योर सजेशन। मैं आपको कुछ चीज बोलना और क्लेरिफाई भी करना चाहता हूँ कि ये सब जो जॉब है पीडी का और ईएमएस का, यू आर राइट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जॉब्स, स्पेशली आई विल से पीडी डिपार्टमेंट। यस। एंड और इसके लिए हम लोग का जो पीडी डिपार्टमेंट होगा उसमें कोई भी बंदा अगर इंटरव्यू देता है, इसका अगर वो ऐसा भी हो कि चलो इंटरव्यू में वो अच्छा गया, डजंट मीन उसका जॉब पक्का हो गया। बिकॉज एक हफ्ता उसको हम लोग के साथ रह के उसका ट्रेनिंग हम लोग देखे देंगे उसको, और वो एक ट्रेनिंग पीरियड होगा उसका चलेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ चलो तुम इंटरव्यू देने आए और तुम्हारा इंटरव्यू हो गया और चलो तुमको जॉब पक्की है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक हफ्ता ऑन ट्रायल तुम रहोगे, विल सी यू कि हाँ भाई तुमसे वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये जो सर्वर इसमें फ्रॉम स्टार्टिंग व्हाट विल ट्राई टू मेंटेन इज दैट कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें जो आरपी है वो उसके हिसाब से ही रहे। जैसे कि ईएमएस ये ना हो कि भाई एक बंदा पैलेटो में पड़ा हुआ है, वहां जाए, वहां पे गया बाइक लेके या कुछ लेके, वहां से उसको बस वो करके उसका लाइफ हील करके वहां से चला है। ये सब नहीं होगा। ईएमएस में अगर होगा उसमें भी स्टेप जाएगा कि एक बंदे का प्रॉपर ईएमएस को भी है, उसको भी प्रॉपर दे ईएमएस आरपी भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बंदा तुमको कोई किसी को उठा रहा है वो भी भाग के चला जा रहा है, ना थैंक यू ना कुछ। ईएमएस उसके तरफ से उसको प्रॉपर आरपी देगा, और पीडी के तरफ से भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हम लोग का जो डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट का जो हेड है, दे विल ट्रेन एकदम अच्छी तरीके से एज मच एज, मतलब क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट करके उसके बाद उसको अपने आप पे छोड़ देने का। अभी देखो कुछ चीज है, अगर कोई बंदे को तुम सिखा भी दो, कोई बंदा अगर गलती करता है बार 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 बार, देन इट गोज इन एक्शन या जो भी हो उसमें। बट फ्रॉम आवर साइड हम लोग ये ऊपर से मतलब पहले से ही ट्राई करेंगे कि कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। जिस डिपार्टमेंट जिस भी जगह जो भी हो, गैंग्स हो या जो भी हो, जो भी आरपी करे उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस और सब कुछ एकदम ध्यान में रख के ही वो बंदा वहां पे आरपी करे। सो ठीक है ब्रो, ओके वी ओके विल कीप एन वेरी गुड आई ऑन दैट। ओके। Then कौन था? Devil. Okay, bro, you have spoken. Then, then who else? Why not? पर्सनल अटैक, यस वी शुड पर्सनल अटैक्स। देखो सिटी में जो भी होता है, एक तो चीज है आरपी, और दूसरा है कि मतलब अगर बाहर आके डिस्कॉर्ड में वो इसीलिए बोला कि भाई सिटी का तो देखो आरपी होता है, और बाहर आके जो होता है वो पर्सनल अटैक। सो वी विल, मतलब आरपी जो है वो वहां तक रख के आएंगे डिस्कॉर्ड में या बाहर जो भी हो, वो हम लोग शांति से बातचीत के वो सब उस हिसाब से हम लोग सुलझाएंगे। सॉरी। So there's a question. Spider Khan asked a question. I have a doubt if the Bangladeshi citizens can easily switch to American style RP so easily because SJRP was basically known for its Bangladesh vibe, but now the Jonagon name doesn't fit with the city because it's a Bangla word. So Janagan is a Bangla word and it's very similar to the word Janagan in Hindi, which also means the same thing. It means citizen. Now, the word Jonagon is, if I am correct, it has almost the same meaning in like 26 different languages. In Urdu, in Hindi, Bangla, and then Philippine, Malay. A lot of languages have the same word, so it's pretty okay to keep something like that, especially that we are. And not just that, Afri, there is one more point. We do use English words in Bengali server, in Indian server, in many servers too, right? So there is Yeah. no barrier for name, I think. Okay, और उसमें वो नहीं आता है आपको. I You mean, forget the name yeah. when you come in the city. What kind of RP you are gonna get? That's I think more important. That will वो players को ज़्यादा वो करेगा. Next, I think. Do you see any question? Both sides. So, Jonagan is just a word. It's the people who make the server. So I guess if people can do it, yeah, that's a good answer. State of the English word. Yeah. So look at there. Like the whole thing is like state of Jonagan. That's it. So you have the whole name
is English. Just there's one Bangla word. So I don't think that makes a big difference. That is just a name. I mean, state of San Andreas, in short, it's called Sosa. So all the Bangladeshi guys over here, you guys know very well what Sosa means in Bangla, right? So people call it Sosa. So what's wrong with that? I can see some people are asking about forms. वो जो different jobs का forms है और सब कुछ वो मिल जाएगा सबको हम लोग दे देंगे. And one more thing, okay, we don't have much questions. I want to introduce you guys with someone. Ethan, can you unmute Ethan? उसका mic किधर है? Ethan भाई किधर है? Where is Ethan? Mr. Ethan. Wait. রিয়ান ভাই আমার একটা কথা ছিল আপনি Sure. ফার্দার কিছু বলার আগে এইখানে সাজেশনে দেখছি জোকার একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে ওকে যদি এই অ্যানসারটা দিয়ে দিতেন রাইট ভালো Sure. কোথা আমি দেখিনি সরি লাস্টে দেখেন আমি ডট দিয়েছি Gay RP or dash RP is allowed. So gay RP is like if I answer that part, it's 2022, guys. So I think we are pretty open to the LGBTQ plus spectrum. It's normal to be gay, it's normal to be lesbian, it's okay because we are all human. So if you want to be gay, that's completely up to you. But if you go on like assaulting people and mocking people, that is a completely different thing. Like you intentionally go and just go out of your way just to make fun of this gender, that is a completely different thing. Like some people do it because they want to do something roleplay like that, but some people, what they do is that they actually just want to mock it, like just for, I don't know, for some kind of satirism or something like that, sarcastic purpose. So that is different. But and the other question is that the word starts with R and it's end with P. I don't want to say the word. So that those sort of RP is totally prohibited. No human being in conscious mind, কোনো মানুষ, কোনো স্বাভাবিক মস্তিষ্কের মানুষ কখনো এসব কাজ করতে পারে না. সো এরকম টাইপের আরপি আই ডোন্ট থিঙ্ক যে ইটস অ্যালাউড. So yeah, I think that answers your question, Joker. The gay RP is okay, but the other thing that there is, I don't think that is allowed. As long as that's genuine RP, that's fine. But exactly like he said, mocking, yeah, वो सब अगर होता है, then that's not fine because कोई भी वो मेल हो या फीमेल हो, no sexual, मतलब वो जो point out या वो सब चीज, that will be not allowed and tolerated. अगर कोई किसी को sexually या कुछ है वो करता है. TikTok RP, yes, sure. If you want to do TikTok RP, you can do, no problem. New rail. Okay, suicide RP. Advanced new life rule. Okay. So now that we don't usually promote suicide RP, the thing is, the suicide, it's a very dark moment in someone's life, and it's something that is not really looked at as a good thing. We do not want to promote this. You, if you want to have an advanced new life rule, there is multiple ways to die. অনেক way আছে মানে life end করা. It's not always has to be suicide. Like কেন suicide কেন? Like it's a যতটা পারবেন যতটা try করব, we will try to like take people away from suicide instead of promoting it. You can fall off a cliff, you can have an accident, you can have a plane crash. There are multiple ways to end your life, like end your character. So I think suicide RP is best to not do. I hope that answers your question. Scripted RP, of course it's allowed. Scripted RP is of course allowed. That is very common when you are especially a content creator. I think scripted RP is one of the most popular category of roleplay for content creators. So permanent death,
Permanent death. Someone asked death drop as permanent. Yeah, it's possible. Permanent death is only possible if both the players agree. Like for example, you want to kill someone permanently, and he also agrees. Say, okay, fine, I'll die permanently. Only then permanent death is possible. You can't just kill someone and say, oh, he's permanently dead. Can a specific character have multiple personality if he does any freestyle RP? So if you want to have multiple personality, if you can really do a good RP on the same character having personality disorder, that is a different thing. But if you want to do play different character, for example, you're a police, you're a gang, you're a doctor, you're like basically like a bootleg Johnny Sins. So that is a different thing. You can just create different characters just to do that. But if you want to have a role play, for example, like multiple personality disorder, which is a mental disease. So people have character disorders. That is a different thing. That is totally based on your RP. But playing multiple characters should be generally done in different characters. That's why we are giving you different characters. I hope that answered your question. Assassin RP. Yeah, I mean, why not? But definitely, if you are getting paid by someone to kill someone, even assassins don't just come and kill someone and just run away. They usually make some kind of interaction. They make some kind of proof, or they will have, like the guy you're killing, they should have a interaction or a storyline that is leading to it. If someone is hiring you, কেউ যদি আপনাকে হায়ার করে অ্যাসাসিন হিসাবে, সো আমার মনে হয় যে আপনাকে হায়ার করছে তার একটা স্টোরিলাইন দরকার, যে একজনকে যে মারতেছেন ওটার একটা কানেকশন দরকার. সো ইউ ক্যান জাস্ট র্যান্ডমলি কাম এন্ড কিল সামওয়ান. So try to interact. If you're an assassin, try to. And not just that, a person ऐसा भी नहीं हो सकता a person just comes in the city and takes a contract from someone and starts shooting or killing someone. Even if somebody wants to play that character, he have to have a proper like backstory and everything too. Sorry for my voice. For like NVL, which is no value of life RP. So no value of life RP, it's like we have a rule. हमारे एक रूल है जो कि ना नो वैल्यू आरपी का, कि एसजेआरपी का स्पेसिफिक एक रूल है कि आपको आपकी खुद की भी लाइफ की परवाह करने पड़ेगी और दूसरों की भी लाइफ की वैल्यू देने पड़ेगी. सो यू हैव टू गिव योर लाइफ value and the other one's life also value. So no value of life RP is not allowed. Can we establish our own business in cities such as Burger Shot, Taco Hut, or Food Pilla? Definitely, yes. Spider Khan, that is definitely possible. As you will go through the progression of the city, you will come across that there are businesses that can go on auctions or that are for sale. So you can take over these businesses with time. You will understand how this will work. Lots of business will come that you guys can take over. What if anyone do misbehave with a girl? Now, misbehaving in sense of RP, which is like, for example, you're in a situation, she told you something, so you're misbehaving. That is, as long as it's part of RP, it's okay, right? But if this gets too personal, too sexual, or to a point that where it's harassment, I think the admin panel will step in and take actions here. Harassment is one thing, misbehaving is another thing. So I hope that answered your question. Please, government job players don't allow to gang RP. Okay, so I think that's entirely on the basis of the department policies. So what policy the departments will have about this thing. So I think that really depends on the departments. If the BCSO wants, freestyle RP, someone has freestyle RP, different post. And about the misbehaving thing, so अगर आपको कोई शक हो कि ये आपको हैरेस कर रहे हैं, तो इट्स बेस्ट अगर आप उस सिचुएशन के क्लिप लेकर हमको सेंड कर दे, so we can see and analyze the degree of what actually happened there, whether was it harassment or whether was it just misbehavior, because confusions like this do happen. Sometimes the guys do end up harassing someone, and sometimes like the situation ends up in a misunderstanding, like you said something but they understood something else. So things like this is very common.
especially in this, not only in our role play, and basically in the world as a whole, that miscommunication between a man and a woman is very common, and harassment is also sadly it's a very common thing nowadays. So we will try to analyze that, and we'll try to take the best action possible. But harassment and any sort of sexual assault is absolutely prohibited in the server. We do not want any of the girls who are playing here to feel unsafe. Okay, most Los Santos based servers don't allow unrealistic name. Will SJRP do the same? We will give you the freedom of choosing your name, right? Because people can have weird, unique names. Okay, so like for example, Vin Diesel. His last name is literally Diesel. So that's a real name. So we are not going to force any names on you. কোনো নামের কোনো boundaries দিচ্ছি না. So you can freely choose your name, but just do not make it something like ABCD 1 2 3 4. That is actually very weird. And also not any abusive word. And not any abusive words. Poison sing example. Yeah. So why not allow 18 plus content in city? 18 plus content in city is there. Okay, so 18 plus content is there in city. If you want to get escorts and stuff, you can do that. But 18 plus content is something else. And harassment is totally something else. So you can make 18 plus content, but do not just go running around in the city naked just for the sake of 18 plus RP. That is not 18 plus RP. That is public, public shaming or something, like shaming yourself in the public, right? So that those are illegal actually. Like you can, if you do that, the police is most probably gonna catch you. And do not make your character, I'm strongly going to suggest that if do not do this kind of things, that you intentionally make your character look like someone, and then you take that character to places just to shame that character. Both, and that also goes for name. You cannot give your names in targeting to someone. For example, someone's name is ABCD. You gave your name as like mother, father ABCD just to shame him, right? So you cannot do that. Do not target your name on someone. That will be a bannable offense. So Orgo said I will use KK. So right, like we said that you cannot use abusive words in your name. So your first name was Khan and your last name was Key. So you can know what that was. So Vin Diesel just texted you looking for me. Yeah, hi Vin Diesel. So loving your movies. I hope Fast and the Furious 10 never comes out, because the 9 was a horrifying disappointment. আচ্ছা, আমরা কোশ্চেনের পার্টটা তাড়াতাড়ি শেষ করি। এনি মোর কোশ্চেনস? যদি কারো কোশ্চেন থাকে Any more কোশ্চেনগুলো questions? তাড়াতাড়ি শেষ করেন। We will give you guys a preview of few things too. We'll যদি কারো কোশ্চেন থাকে live, কোশ্চেনগুলো ধরে। so question যদি থেকে থাকে, so किसी का भी कोई question हो, so please write them. क्योंकि उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सिटी में will take you and we'll just give you a tour, and soon after we finish this meeting, city will be up, so you guys can go and see. So अभी रात भी बहुत है. I will not hold you guys, you know, too long, so that कि ऐसा भी हो कि बहुत ज्यादा रात हो जाए, So आप लोग Mr. सिटी में भी Papai घुस ना asks पाओ. who is the owner. So the owner is Green Ghost Bhai. Green Ghost. So he's the owner here. He's the only owner. He's the solo owner. Han Solo. রিয়ান ভাই যে প্যাক সিস্টেম গুলো একটু বলে দিতেন। पैक सिस्टम, यप, पैक सिस्टम टा जो कार पैक्स है, वो हम लोगों ने लिख दिया है. सब लोग थोड़ा सा देख सकते हो आप लोग कि इफ किसी को अगर कोई क्वेश्चन होता है, सो कैन यू आस्क. थोड़ा सा आप लोग देख लो. वहाँ पे जो कार पैक्स है, वहाँ पे you will see car pack system, showroom. So if you guys don't understand anything, please Rian Bhai ka server owner dikhte chahiye. Okay, that's bro, thank you for he's this. the owner. Yeah, he's Thank you the for this owner. So suggestion.
So Rian Bhai over here is the community manager and he's doing an excellent job Yes, as a I'm community doing my manager. job and पैसा चलो ठीक है What let's not kind talk of about it. vibe you guys will give us? One more thing I'm gonna give you to I just want to tell you tell everyone that some of you know Ethan bhai, some of you know Ethan. So the thing is from Bangladesh I think some of you know, some you doesn't know. I want to tell you something that जो gangs है gangs के लिए बहुत ही स्पेशल वाला आरपी हम लोग देने we are going to give, you know. I'm sure gangs they're gonna have lots of fun, so uh, come in city and see okay what we're gonna bring for you guys. Okay, so Banis, there's another question. Rian Bhai, where are you from? Malaysia, India. He's from Sweden. And Banis 69 at previous old class. I did not understand the question or statement. Moving on. All right. So give us some Yes, we demo. will Yeah, give we'll some demo. definitely Yes, do we're that. just waiting कि कोई किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या इसके लिए. Economy of the server for grind. Easy, normal, hard. I'm going to say normal because if you put in the time, you will earn money, a lot of money. If you think that you're going to take it slow, it's going to take you a long time to earn money, but it's not hard. Okay, it's fairly simple. It's not hard. It's actually depend on how much time you put in and how much effort you put in. Uh, Green Ghost bhai, are you in server? Yes, I am. Yes. किसी का कोई क्वेश्चन है regarding car pack? Someone said, "Where are Any you from?" question Pizza. regarding car pack? Okay, I heard people in the city Open don't server. know who to do RP. Okay, I heard your city people don't know who to do RP. Is it right? Okay, I think you mean like this city has people who don't know how to do RP. Is that what you're trying to say? Because I cannot understand your question. Afid, can I question one thing? Can I question this? I don't know if you have done RP in our city or not, and I don't know what kind of RPs you did, but I'm sure you're gonna have really good RP in our city at this moment. Yes, you don't know. Okay. We try to do Can our can best to generate good RP. We definitely try our best to can you give generate a good RP. poll that if people wants a demo or they wanna go to city straight away? Can you যে give a poll? Let's see. একটা কোশ্চেন ছিল কার মিস্টার লেজেন্ড আমি ও আনমিউট করে লেজেন্ড ভাই ইয়েস ওকে শিওর এন্ড তোমরা কেউ একজন ওই একটা ইয়েটা ক্রিয়েট করে দাও আচ্ছা I'm creating a আফিদ আফিদ একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ ভাই, আমার তো একটা রুলস হলো যে গভর্নমেন্ট ইয়েতে তো গ্যাং করা যাবে না তাই না তো আমার একটা অ্যাকাউন্টে হ্যাঁ এগুলো কবে ছিল কিন্তু নাই বললো তো আমি বলি নাই তো যে এগুলো আছে গভর্নমেন্ট গ্যাং তো করতে পারবে as long as লাইক আমাদের ডিপার্টমেন্টের পলিসির উপর যেটা ডিপেন্ড করে এটা বলছি গ্যাং পুলিশ আমার মনে হয় না যে কোনো ব্যারিয়ার আমরা দিছি ডিপার্টমেন্ট পলিসির উপর বেস করে এখন না যদি আমি এখানে ওই একটা জিনিস শুনলাম যে লাইক মানে পুলিশে থাকলে গ্যাং করা যাবে না এরকম কিছু না 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 আমরা বললাম যে ওটা পুরোটাই ডিপার্টমেন্টের পলিসির উপর ডিপেন্ড করে যদি ডিপার্টমেন্টে আপনার শেরিফ ডিপার্টমেন্ট দেয় যে হ্যাঁ গ্যাং করতে পারবে তাহলে দি করবেন আর যদি এলএসপিডি বলে যে না পারবে না সোয়াট যদি বলে হ্যাঁ পারবে সো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ডিপার্টমেন্টস ওকে না ওরকম বললে আমার একটা কথা ছিল কি যে ওরকম যদি হয় তাহলে তো লাইক আমার মানে গ্যাং এর যেটা ইয়াতে অ্যাকাউন্ট আছে ওখানে আমার গাড়ি আছে হ্যাঁ তো সেগুলো কি ট্রান্সফার করার ওয়ে কি আছে আপনি যদি এখন একটা ইসে করতে চান একটা ক্যারেক্টারে সব কম্বাইন করতে চান দ্যাট ইজ I think it's possible. You have to talk to the owner himself. আমি এখানে ডিসিশন দিতে পারবো না so it's best if you communicate with the owner. Okay, got it. Okay, so Mr. Papai asked, I heard in the city people do PG. Yes, we do have someone named PG. His name is Purple Ghost, and
do people do him? No, he's very very straight, and he's not open to things like that. So people cannot do him. They take hostage when people change clothes. Okay, they take hostage when people change clothes. So I don't know if you're like talking about things that happened to you in the past. But they take hostage for people when they change clothes. So that is most probably, if I recall, that is way before even SJRP version 2.0. Something like this might have happened. And as far as I remember, they actually, every single people who were involved in the situation actually served at least community service or ban time for that thing. And if someone do like commit something like that, these are not quality RP. These are always Okay. Okay, should we wait more or not? I think we should just open the server because as per poll, it's people saying that open the server, right? So you just wanna straight jump in. Okay, 10, 11. Okay, 10, 11. Still, it's open the server. 12. So, guys, Yasin bhai, should we just open the server so that everybody can go in? So the poll is like it's actually very equal. So Yeah. I think the best thing to do would be Okay. We'll just give you a short tour. We'll do both. Okay, yes, We'll do demo. both. Okay, we'll just give you guys a short tour. So Okay, as long as the demo is going on, I will be answering the questions. So they will take care of the demos, and I will answer any other question that you will bring over here. हम तो कहीं से भी उठा लेते हैं. Yeah, that is totally depending on your RP. As long as like the guy that you're doing RP with is agreeing to whatever you're doing, bro, anything is allowed. Okay, if you want to call him a donkey, and if he is agreed to like act like a donkey, dude, anything is allowed. So बीवी मियाँ तो राजी तो क्या करेगा काजी, right? So hey, hello, I'm a pro esports RP player. Okay, স্ক্রিনটা যদি হচ্ছে না দেখতে পারে আরেকজন হচ্ছে স্ক্রিনটা থেকে একটু শেয়ার দিয়েন upper screen. Okay guys, सब लोग थोड़ा घुस जाओ screen पे. Green ghost उसका. Okay, can I do sexual RP with my friend? What if she accept this because international rules allow this? Okay, if your friend agrees to that, then I think it's okay. But then again, we are going to suggest not to do it. But if your friend feels uncomfortable and if your friend decides to complain, then things can turn sideways. Who asked this question? So it's best to make sure that you do not do things like this, right? Because like if it's your personal thing, like I don't think this is the best do form of RP to be something doing. as long as it doesn't come to us. If we don't see, if we don't hear about it, it's okay. We don't know, So it's then we don't know. But if we see, or you know, जिसके साथ भी तुम वो करते हो, वो खुद ही अगर ऊपर आके कुछ बोलता है, then we have to take actions. You know, I think you have been asking lots of sort of questions. I don't know what कौन सा answer तुमको चाहिए. Go in private inside your house and ask for I her can give permission. all kinds of answer. What kind of answer you want, bro? You can just tell me. I can just give you. No worry, bro. Just right. No So, worry, bro, new city is launching. Do something new. Don't bring the old situation here. Enjoy. Yes, you're absolutely right, Beacon Shadow. Exactly, bro. Okay. Here is a preview of our new PD. Afid, can you just walk through video tar yete? Now we're on a new PD. Since we're walking through okay, so since we're walking through PD, so welcome to the Los Santos Police Department. So right here we see that this police department has a very antique vibe to it, and if you guys are Batman fans, you will know that this is actually from Gotham. So it's a very short and confined PD. There is not many rooms going on here. It's very simple,
but it has this antique vibe to it, which makes it look really nice. So that was the PD. The PD has a garage connector to it, and that's it. Give me a second. So right now we are in front of the 7-Eleven. You can see that these things also have a custom maps to it. So we tried our best to introduce custom map to the simplest of things. So we're going to use the target system. So if you open the target system, you can see the menu, and if you go to the menu, you will have two options: either you pay by cash or you pay by credit. And you just choose the amount, and if you pay by cash, you pay by cash. If you pay by credit, it's totally up to you, because we will have the system for ATM cards. So if you feel like you don't feel safe carrying cash around with you, just carry credits. We will have that option. All right, so next up, so please do not do what Green Ghost Bhai is doing. Always wear helmets. Safety is our number one priority. So right now where he's going, these are the storage lockers. So if you think you need places to store your stuff, you can rent a locker for a certain payment, and you can rent more than one locker, right? Yeah. So you can extend storage. You can even extend. You can even extend storage. Yeah, you can buy storage. For example, if you think that this is not enough, you can just go on and extend your storage. So for a safe place to put your things in, storage seems like a pretty good option. And right now we're heading to the thing. Our pinkish model, it's on the way. We're gonna introduce pinkish model 2. We're just waiting for a good script. We do have some, but we're not happy with those, so we are waiting for one that's gonna come out very soon, I think. And as soon as that comes out, we're gonna grab it. So right here you see the PDM. This is also a custom map. And if you see there are fixed cars over here, don't worry, just call a PDM manager. He'll be able to change it for you. So, and right here what we have is that this is the robbery status. These change with the amount of police and EMS and PDM or whatever there is in the city. So this is the status board, and you can see what you can do and what you can't do. And if you press F6, you can actually see your personal status, what job you have, how much money you have, and everything else, your crafting rating and whatnot. So right now we're heading to the ammunition. So how the ammunition will work, you will be able to access the ammunition storage, but you will not be able to see all the weapons that is available unless you have a license. Now, in order to get the license, you'll definitely have to go to the police. Now, the police will not only give you the weapon license. See, if you do not have the license, you will not be able to access the proper weapon shop. Now, not only that you have to have a license, see, now you can get access to every weapon that's available over here. Now, if you, not only that you have to have a license, you will also need the police to verify and put it in your database. The police will have a thorough database. For example, if you lose a license and the police has your license in the database, he can just freely give you a license with no charge. So the police will be maintaining a thorough database of every citizen, including their hunting license, your driving license, your firearms license, driver's license. So everything will be there in their database. So now we are approaching the cafe. So my words. So all right. So this is the cat cafe. So it's a really nice addition to our server right here. If you had a really tiring day and just want to come down and just play with some cats, you can just come here, grab some food. Even if the shop owner is not here, you can just get a Buddha bowl and a bottle of water and sit by the fire and enjoy. And when the owner is here, you can surely get some really good food. Trust me, the food here is delicious. I've tried it. And the cats, they usually love it. And if you get too close to them, they might scratch you, so beware of that. Alright, so
Where are we going now? আচ্ছা আর কি আসছে দেখার মতো? আর তো অনেক কিছুই আসছে। There are more stuffs, but I think it'll be better if you yourself এখানে নিউ you know জব আনা figure out আছে, those things. দেন হচ্ছে another জব সেন্টার এখানে দেওয়া আছে। So I think basically this was just a little tour, Someone asked, do you have and the cinematic mode rest. available? Clothing, Yes, we do clothing have store টা cinematic দেখাই দেবেন। mode available. Yasin bhai, someone asked if cinematic mode available আছে নাকি? Yes, we do have cinematic mode. It's in the command T/HUD. You will be able to activate the cinematic mode. And we also have something very interesting. If you type T/FPS on, your graphics will be automatically set to a certain setting so that you will get a certain FPS boost. So if you have a bad configuration and suffer from FPS loss, you can just use T/FPS on and you will be gaining that teeny tiny bit of advantage, but you will see the difference. So this is the clothes store. You will see that we have added some custom mapping to it, and it will look good. So even though it's a really expensive store, but this girl over here, she's actually wearing something shabby. So let's not look there, but you will find good clothes here, I assure you. All right. Now, since Gringo's bhai doesn't have anything to buy, he's just gonna head out of there. And where is he gonna go now? গ্যাং Go এমএলও to গুলো mechanic দেখাবো। shop. গ্যাং Can we go to mechanic He's shop? probably gonna go to yeah. Mechanic shop. So right now, this is the mechanic shop, and the mechanic shop right here is it's big. আচ্ছা আমাকে It's মেকানিক very শপ করে big. দেখাইতে হবে নাকি জাস্ট হচ্ছে এমএলও? No. You don't need to. Yeah, so Yasin this bhai, I is think very এটার পরে big. we can That's all I can just say about it. straight away It's big and it has pass plenty over. of lights. It has like fresh air going in and out, so I think the mechanics doing the job here will be comfortable with the গ্যাং environment. হাউসগুলো দেখাবো? So now we're heading to the Yeah, লাগবে না sure. ইয়াসিন ভাই, আমরা ইয়েতে চলে যাই বিকজ অলরেডি অনেক লেট হয়ে গেছে তো। ওকে শিওর সবাই একটু ঢুকে they can enjoy. শিওর Let's So head that was to all. Yeah, I think that's all that you need. There are other things there are in this map as well. Wink, wink. So the hunting is probably the most fun job that you can probably do. Like that is something that I love to do in my leisure time. So try out the hunting, try out every single job there is. I'm sure you'll have fun. So okay, so here's the thing. If you're really stressed out, like I am right now, you can like just come here, get high as hell, and sit down and grab a blunt and smoke your head out. And if you think like you have to Yasin bhai, cookie store does not? Cookie stores. Yep. Cookie store and plasma game. Alright, so this is the cookie store. Yeah, it sounds like something boring, but it's not boring, trust me. If you have a cookie, this is basically it's edibles, like it's a different name for edibles. So just grab a bong, buy a bong, or grab cookies or batters, or there are other stuff. Just grab one of those and you will see the effect. Yes, and effect দেখাই দিবেন. So if you take a puff of this bong, I'm pretty sure you will be high for the rest of the week. Yep, there we go. Pinic. Yep, Pinic at the disco. That's why he is called Green Ghost. Yeah. You see the green in his name is basically okay. Where is there a police? Yasin bhai, we do have someone saying that let's just let them explore. I think we should just let them explore the rest. ওকে তো Yeah. আমার সাইড Yes. থেকে হচ্ছে আমি একটু কি দেখাইলাম there is a lot of things হসপিটালটা দেখলাম না, দেখাইছিল হসপিটালটা it's মেহেদি ভাই it's actually just a একটু difference in your old hospital যেটা আপনারা ইউজ করছেন last time pillboxের এখানে, so it's very close to the old hospital, so I think that's do we get arrested for carrying it if you do not carry excess amount, that is there's something called medical marijuana, so as long as you do not contain excessive amount like 2 kilograms of weed, I think you're good to go, bro. I'll try to get you some autographs. তো See ya. আমি সার্ভারটা কি ওপেন করে দিচ্ছি না? Sure. So And we declare the server open. Ta-da! So the server is open now. Yes. Everyone
can just It jump will in. need just 5 minutes to start the server. Yeah, sure, 5 minutes or something. So, so that's I think all for right now. So we'll meet in city. Welcome to SJRP V4.1. Let's go. জব কি এখন দেওয়া হবে লেজেন্ড ভাই? জব আপনার যেহেতু ছিল, আপনার জব প্রবলি এখন আছে। সো and I will নাই নাই personally এখন enter the এখন circle. কারো জব নাই ওখানে, নতুন করে নিতে হবে। এখন নেই, Okay, so নতুন করে ইয়ে করা so লাগবে। আমি তাহলে personally ঢুকতেছি। I will make sure that you get your job, so no worries about that. All the police that were there from before, just contact me in the PD. যাদের পুলিশের জবটা ছিল তারা কাইন্ডলি আজকে সিরিজটা একটু ঘুরেন, জব পেয়ে যাবেন সবাই। And training কিন্তু I will one more thing, আমি কিন্তু পুলিশদেরকে I will give you guys a day off, uh, so that like you guys can enjoy time with your family and have vacations as well. So police will give you a lot of facilities and a lot of stuff. We'll give you vacation money so that you can go on vacations and everything. There will be a lot of things incoming for police. So, and that was a small advertisement from my behalf. Yes, join the LSPD. So yeah, I think the survey is gonna be. Find the application under the application sector. তা আজ জব পাবো না, আমি জব দিয়ে দিচ্ছি, আজকেই দিয়ে দিচ্ছি, নো ওয়ারিস। তারপর আপনি ঘুরেন, ওটাই বলতেছি যে আপনি ঘুরেন, বাট জবের সাথে ঘোরাঘুরির কানেকশন নাই। আমি জব দিয়ে দেবো। আচ্ছা, আমরা ওয়েলকাম কার্ড হিসেবে কোন কার্ডটা দিচ্ছি এটা বলে দেওয়া উচিত না? प्रीमियो আমাদের যে ইভেন্টটা হবে, हम लोग का एक इवेंट होगा, उसमें फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, राइट? Toyota Premio, which is very uncommon, and that car will be given. So I think Saturday, Rian bhai, Sunday, Friday. I you made an already understatement said once, yeah. I said yeah, once. so that was Yeah. actually kind of an understatement. Let me like spice it up a little. So basically we're giving you a car that is only available in this server, in like I can confidently say it in Bangladesh, but I don't know about India or something, because we had to customly make it, not just bring it out from somewhere. We had to like literally make it. So this Premio is not only gonna give you that uniqueness, but you're gonna love this car. It looks amazing, trust me. তো কারো যদি কিছু না থাকে আমরা মিটিংটা শেষ করেই সো সার্ভার সবাই আপ যাই। আছে, হচ্ছে আপনারা চাইলে ট্রাই করে দেখতে পারেন আপনাদের সার্ভারে। So ঢুকেন এন্ড হচ্ছে so yeah, so हम लोग मीटिंग यहाँ पे ही एंड करते हैं। नेक्स्ट मीटिंग के लिए we will let the date and time know, or so server is up, so we can just jump in. Also right? for the application for stuff, the हाँ, application is open now. application के लिए सब applications भी open है, ठीक है? So you can just apply, and maybe आज नहीं तो कल उसका हम लोग रिप्लाई वो कर देंगे, क्योंकि आज बहुत काम भी हम लोग कर रहे थे, एंड अभी भी थोड़ा सिटी में काम कर हम लोग करेंगे। सो जस्ट हैव पेशेंस। अभी भी अगर नहीं हम लोग रिप्लाई देते तो बाय टुमारो यू विल गेट योर रिप्लाई। ओके, सो फ्रॉम माय साइड दैट वाज इट, and please add something if you want to add. Yeah, so this was Alfred behind the mics, over and out. So thanks everyone for coming. আচ্ছা, যারা সাপোর্টে আছে তারা সবাই এটা अवेलेबल যে বসি, কারণ অনেকের আজকে সাপোর্ট হ্যাঁ তো ওকে, সো এভরিওয়ান গুড লাক। Yes. তো আজকে লাইভ এই পর্যন্তই ছিল। টাটা, বাই বাই। Bye everyone, and have fun. Bye.